वी ऑल लव एसयूवीज डोंट वी। अब अगले साल 2024 में इंडिया में एसयूवीज की मतलब भरपूर लॉन्चेस होने वाले। मास मार्केट एसयूवीज, 7 सीटर एसयूवीज, प्रीमियम लग्जरी एसयूवीज, सभी एसयूवीज इंडिया में आने वाली। एंड इसमें आपको कई सारे बढ़िया बढ़िया ऑप्शंस मिल जाएंगे। सो इफ यू आर प्लानिंग टू बाय एन एसयूवी, आई सजेस्ट यू वेट फॉर अ व्हाइल बिकॉज 2024 इज गोइंग टू बी फिल्ड विथ न्यू एसयूवी लॉन्चेस। आज के इस वीडियो में आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द टॉप 10 मास मार्केट एसयूवीज कमिंग टू इंडिया। वी वोंट टॉक अबाउट लग्जरी एसयूवीज इन दिस वीडियो बिकॉज लग्जरी एसयूवीज मर्सिडीज, BMW, Audi, Lexus ये सब की तो आती रहती है एंड देयर आर वे टू मेनी मॉडल्स एंड वील फोकस ऑन द हाईएस्ट सेलिंग मास मार्केट ब्रांड्स राइट नाउ। सो एट नंबर 10 वी हैव द 5-door फोर्स गुरका। अब हाँ, फोर्स मोटर्स बहुत स्लो काम करते हैं इंडियन मार्केट में। 2021 में दे गॉट द 3-door फोर्स गुरका एंड ऑफ कोर्स दिस इज अ वेरी कंपीटेंट व्हीकल बट इट डजंट हैव अ लॉट ऑफ क्रीच कंफर्ट्स और इतनी ज्यादा बिकी भी नहीं। द सेल्स आर वेरी वेरी लिमिटेड कंपेयर टू द थार एंड इवन द जिमनी। Force Motors has been working on a bigger version of the already big Gurkha. इसकी 5-door वर्जन आने वाली महिंद्रा थार की 5-door को टक्कर देने के लिए एंड दिस विल फाइनली बी लॉन्च्ड इन 2024। काफी ज्यादा वेट करवाया फोर्स मोटर्स ने एंड आई होप द वेट इज worth and I hope they have added some more features, some more premiumness to this expensive off-roader. So number 10 की बात कर ली। At number 9 we have the Mahindra Thar 5-door। ये गाड़ी compete करेगी Force Motors की Gurkha 5-door के साथ and of course with the Jimny and of course with other conventional SUVs also। इसका भी वेट काफी करवाया महिंद्रा ने but we know that a good product is incoming। Mahindra Thar 3-door already बहुत ज्यादा popular Indian market में। It is selling like hot cakes and the Thar 5-door is going to up the ante for sure। ये गाड़ी ज्यादा बड़ी होगी, ज्यादा प्रैक्टिकल होगी, थोड़ी ज्यादा कंफर्टेबल होगी, थोड़े एक्स्ट्रा फीचर्स इसमें आपको हो जाएंगे, काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट्स मिल जाएगी और हाँ प्राइसेस भी थोड़ी बढ़ जाएगी। बट द थार 5-door इज समथिंग दैट आई एम रियली वेटिंग फॉर एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल हैव देयर होप्स फ्रॉम दिस ऑफ रोडर बिकॉज बहुत लोगों को लगता है कि थार 3-door इतनी ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं है। सो दे आर स्टेटिंग ऑन द फेंस राइट नाउ एंड दे आर एक्चुअली वेटिंग फॉर महिंद्रा टू लॉन्च द बिगर थार। एंड टॉकिंग अबाउट number 8 in this list is the Skoda Kodiak। The new generation Skoda Kodiak made its global debut just a few weeks back and I think it is massively different compared to the current iteration of the Kodiak। Exterior में आपको major changes मिल जाते हैं। From the back it doesn't look as good as the current Kodiak but इसमें आपको थोड़ी MPV वाला stance मिल जाता है but it is much longer than the regular Kodiak and the interior is also all new। You get a lot more features, a lot more technology, a new dashboard, new seats, better space and comfort and a 2-liter TSI petrol engine। For now globally इसमें diesel engine भी आता है which won't come to India but India might get a plug-in hybrid version of the Kodiak in the later stages। Initially 2-liter TSI engine आ जाएगा and this will compete against the Jeep Meridian and the Toyota Fortuner and of course the MG Gloster। At number 7 we have a car from Nissan। Yes, Nissan is actually going to launch a new car in India and I know this might sound surprising but ये होने वाला है because they are launching the X Trail which will rival the Jeep Compass and the Hyundai Tucson। These will be the biggest rivals of the Nissan X Trail and ये X Trail आएगी CBU रूट से which means it won't be cheap by any means। काफी महंगी हो सकती है, 35-40 lakh is my expectation and of course it will give some competition to the XUV 700 also। The Nissan X Trail was showcased to Indian audiences 1 year back यानी कि 2022 में दिखाई थी Nissan ने and the launch was supposed to happen this year but it has been pushed to next year। Nissan X Trail will of course be packed with features inside out। इसमें आपको hybrid powertrain भी मिल जाएगा। There won't be a diesel engine for sure and I think I'm actually looking forward to seeing how Indian audiences react to such a premium vehicle from Nissan because they have been quite late with the new launches in India। At number 6, we have the Toyota Urban Cruiser Taser। Now, Urban Cruiser Hyrider is something that we've already seen। Grand Vitara की cousin है वो। What is the Urban Cruiser Taser? ये basically Maruti Suzuki Fronx की cousin होने वाली है। This will be placed in the same segment as the Maruti Fronx and it will give competition to cars like the Hyundai Venue, Tata Nexon, Maruti Brezza and of course the Maruti Fronx also। इसमें दो engine option आपको मिल जाएंगे। The lower variants will get a 1.2-liter K series petrol engine which is shared with the Baleno and of course the Glanza and the high-end variants will get a 1-liter booster jet 3-cylinder turbo petrol engine again shared with the Fronx। ये engine से Fronx में आता है अभी के लिए and the Urban Cruiser Taser will have different styling compared to the Fronx। आगे से पीछे से थोड़ी अलग लगेगी। Interior will have the same layout but in a different color theme। Meanwhile, I'll move on to the next car which is the Hyundai Alcazar facelift। Alcazar came out in India almost 3 years back। It is selling in really high numbers। Petrol, diesel सब इसमें आपको मिल जाता है। It is quite a nice 7-seater and quality इसमें आपको काफी अच्छी मिलती है। Features बढ़िया मिल जाते हैं। With the facelift, the Alcazar will have
some exterior changes, बाहर से थोड़ी अलग लगेगी, interior will get some minor changes, and the biggest change will be the addition of ADAS level 2 features to this vehicle. अब Alcazar की बात की तो next car has to be the Hyundai Creta in the list for sure, right? The Hyundai Creta came out in early 2020 in India. It's been 3.5 years since launch, and the facelift is actually long due. The facelift will arrive in the first quarter of 2024. It will have major changes for sure. Dashboard की design change हो जाएगी, new color themes will be offered. It will get a lot more features, ADAS level 2 features भी इसमें आपको मिल जाएंगे, and even the exterior will be heavily modified. नई grill, नई lights, नए bumpers, नए alloy wheels, ये सभी चीजें इसमें आपको मिल जाएगी. And the Hyundai Creta facelift should really stir up the segment. That is what I am expecting. And moving on to the next car in the list, we have something in a segment lower, and this is the new Mahindra XUV 300. The 300 has been around since forever. इसकी नई वाली मॉडल काफी टाइम से टेस्ट हो रही है, एंड दिस वन विल हैव मेजर चेंजेस इनसाइड आउट. इसमें आपको एक्सटीरियर में XUV 700 जैसे थोड़े डिजाइन एलिमेंट्स मिल जाएंगे. महिंद्रा की जो अपकमिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है BE, उनके भी डिजाइन एलिमेंट्स इसमें आपको थोड़े मिल जाएंगे, देखने मिल जाएंगे. हेडलाइट्स और बम्पर्स के डिजाइन है वो, एंड द इंटीरियर विल ऑल्सो गेट अ मेजर रिविजन. न्यू डैशबोर्ड, लॉट मोर फीचर्स, एंड अ बेटर कन्वेंशनल ऑटोमेटिक गियरबॉक्स विल बी ऑफर्ड. अभी सिर्फ AMT आता है, लेकिन टॉर्क कन्वर्टर भी महिंद्रा ऑफर करेगा. पेट्रोल डीजल both will be offered, and the same changes will then be carried over to the XUV 400 also in the later part of that year. The next car in the list is the Kia Sonet facelift. ये भी early 2024 में expected है, and the design of this vehicle was leaked just a few days back. इसमें भी आपको नया बम्पर मिलता है, नई लाइट्स मिल जाती है, नए alloy wheels मिल जाते हैं, and the feature list will also see a big improvement. Already काफी सारे features इसमें आपको मिल जाते हैं. However, the engine options are likely to be the same. 1.2 liter Kappa engine for the lower variants, 1 liter turbo petrol for the mid and the top variants, and of course a 1.5 liter diesel engine shared with the Creta, Alcazar, Seltos and even the Carens. इसमें आपको IMT, manual, automatic सभी चीजें मिल जाएगी, and I think the Sonet should again be one of the highest selling cars in its segment. Finally, at number 1 in the list is the much awaited Tata Curve. टाटा ने Curve concept दिखाई थी इंडिया में काफी टाइम पहले, ऑटो एक्सपो पे भी हम लोग ने ये गाड़ी देखी, and Tata will be launching the ICE variant of the Curve and also the EV version of the Curve. The EV is likely to have 500 kilometers of claimed range. ICE में आपको 1.5 liter turbo petrol engine मिल जाएगा, a new engine from Tata Motors, and I think the Curve is something to really watch out for. It will be positioned between the Nexon and the Harrier. ये compete करेगी Hyundai Creta and Kia Seltos के साथ, and this is expected to have a long list of features. इसमें आपको futuristic design मिल जाएगी, and I think 5-star सेफ्टी रेटिंग तो इसमें मतलब बिना बोले ही आने वाली है. सो दिस इज समथिंग दैट बायर्स शुड रियली वॉच आउट फॉर. इट शुड बी लॉन्च अराउंड द सेकंड हाफ ऑफ 2024, एंड इट रिमेन्स टू बी सीन कि पहले आइस आएगा या पहले ईवी वर्जन आएगा. अपार्ट फ्रॉम दैट, ऑफ कोर्स टाटा मोटर्स इज रेडिंग द ईवी वर्जन ऑफ द हैरियर एंड सफारी ऑल्सो. सिएरा भी आ रही है, वो सबको थोड़ा टाइम है. हैरियर माइट कम इन 2024, बट दैट वील डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो विच विल फोकस ऑन द टॉप 10 अपकमिंग EVs in 2024. तो ये सब जो गाड़ियां थी उसमें से आप किसके लिए वेट कर रहे हैं? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो.